Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, today's, last time we studied about what is an environment and what is its relationship, and then what is an ecosystem and what are the parts of an ecosystem. Today we are going to study, this is the 32nd lecture of the series of chapter 4, and today we are going to study about what is habitat. अब हम आज पढ़ेंगे, this is 4.2 topic. Habitat किसे कहते हैं? What is habitat? The habitat, the place where an animal or plant lives and reproduces. Habitat क्या है? वो जगह जहाँ पे कोई plant या animal रहता है और अपने आप को reproduce करता है, मतलब कि अपनी है ना वो वहाँ पे पैदा होता है, वहाँ पे नए plants के बच्चे पैदा होते हैं, etc. The place where an animal or plant lives and reproduces, उसे हम कहते हैं कि ये एक हैबिटेट है. What does a habitat do? Habitat करता क्या है? It provides the things an organism needs. तो हैबिटेट जो भी कोई हो उसके पास कम से कम उस ऑर्गेनिज्म को फीड करने के लिए खुराक होनी चाहिए. It provides, वो फराहम करता है the things, वो चीज़ें किसी ऑर्गेनिज्म को जो रिक्वायर्ड है उसको जिंदा रहने के लिए, मसलन फूड, वाटर, शेल्टर एट्सेट्रा. ये इसको कहते हैं, ये उसका हैबिटेट है. मेनी पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इन ईच हैबिटेट. अब किसी भी ऑर्गेनिज्म की मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म है ना, उसकी काफ़ी पॉपुलेशन किसी एक हैबिटेट में रह सकती है. मतलब एक दरख्त है, उसके नीचे कीड़े भी हो सकते हैं, एंट्स भी हो सकते हैं, उसके नीचे फल भी हो सकते हैं, उसके ऊपर उसके कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकती हैं. इट हैज़ एन हैबिटेट ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस. सो व्हाट डज अ हैबिटेट डू? इट प्रोवाइड्स द थिंग्स एन ऑर्गेनिज्म नीड्स. उसमें फूड देता है, उसको पानी भी देता है, शेल्टर भी देता है. तीन चीज़ें बहुत अहम है किसी भी इंसेक्ट को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए. एक खुराक चाहिए उसको, एक पानी चाहिए, एक शेल्टर चाहिए अपने आप को मुख्तलिफ किस्म के मसाइब से बचने के लिए. धूप है, जलजला है, फ्लड्स है, पानी एटसेट्रा. इट नीड्स अ शेल्टर, ठंडक है. एंड मैनी पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन अ हैबिटेट. No, next topic is 4.3. This talks about what are the kinds of habitats. Habitats कितने किस्म के हो सकते हैं? Organisms live in different kinds of habitats. ये जो अल्लाह पाक ने जो बनाए हैं organisms मुख्तलिफ किस्म के, वो मुख्तलिफ किस्म के habitats में रहते हैं. An organism has special features to live in its habitat. Every organism lives in that habitat where there are special features related to the life of that organism. One of the habitat is known as a grassland habitat. यानी जैसे कि बहुत बड़ी जगह है, वो पर घास ही घास उगा हुआ है. That kind of a place is known as a grassland habitat. A grassland is a grassy, windy, partly dry area. यानी grassland क्या किसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर घास उगी हुई है. is a grassy, windy, हवा भी वहाँ चलती है. पार्टली ड्राई, बारिश ज़्यादा नहीं होती लेकिन होती है, वह पार्टली ड्राई होता है और बाकी तर भी होता है. दीज एरियाज रिसीव अ मीडियम अमाउंट ऑफ रेन. ऐसी जगहों को मीडियम अमाउंट ऑफ रेन मिलती है. द सॉयल फाउंड हेयर इज़ फर्टाइल. सॉयल जो होती है वो फर्टाइल. वो ग्रासी लैंड्स में ज़्यादा इज़ नॉट टू मच ऑफ रेनफॉल ओवर देयर. इट्स पार्टली ड्राई, large area, and grass grows over there, and the soil is very fertile. Grasses are the producers in a grassland habitat. जो घास होता है ना वो प्रोड्यूस करता है खुराक, प्रोड्यूसर है किस मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की खुराक के लिए. Grasses are the producers in the grassland habitat. And mostly grazing animals, ज़्यादातर इस जगह पे वो ऐसे जानवर होते हैं जो कि घास खा के जिंदा रह सकते हैं, like sheep, goats, cows, antelopes, buffaloes, and deer are a few examples of animals that live in a grassland. A few flesh eaters, some animals like cheetah, foxes, wolf, and a few birds like owls and eagles, hawks, etc. also found. A grassland may also have, these kinds of goats, cows, sheep, etc. because they come to take their food, and it can also have animals like cheetah, which are flesh eaters, जो कि खाते हैं एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है. They are flesh eaters, like cheetah हो सकता है, fox हो सकता है, wolf हो सकता है. They are also found in the grassland, and there are certain birds also which eat other birds like eagle,
लाइक हाउल भी जो है ना वो रैट्स को खाता है, फ्रॉग्स को खाता है, ईगल एंड इट ऑल्सो इट स्मॉल बर्ड्स, हॉक्स जो होती हैं, सिमिलरली दे आर ऑल्सो फाउंड इन ग्रासलैंड. मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन ग्रासलैंड. अब ग्रासलैंड में बेशुमार किस्म के कीड़े मकोड़े भी मिलते हैं. Okay, so what is a grassland? We define it's a grassy area which has a fertile soil. It is partly dry. It has less to medium kind of rainfall falls over it. And many kinds of animals live like goats, sheep, etc. Then other flesh eaters like cheetah, etc. They also live here. Then some birds like hawks and owls are also found there. And then some insects are also found. This is how would you define what is a grassland, and these are the concepts that you must have in your mind before you proceed further. Now the next kind of a habitat is a pond habitat. In a pond means which contains water, it's a pool of the pond habitat. A pond habitat is an aquatic habitat. ये पानी का habitat है which is rich in life. उसके लिए बेशुमार जिंदगी होती है. Plants like algae, duckweed, water lily, etc. उसमें पौधे भी ऐसे लगे होते हैं जैसे कि एल्जी लगी होती है, जिसमें डक वीड होती है, वाटर लिली एक प्लांट फूल है बड़ा खूबसूरत. इस्लामाबाद के नज़दीक भी जो है यू विल फाइंड ए लिली पॉन्ड ओवर देयर. वेल गोइंग चक्करपड़े की तरफ जाएँ तो वहाँ पर भी हैं. एनिमल्स लाइक फिश एंड पॉन्ड स्केटर, वुल्फ, स्पाइडर्स, स्नेल्स, फ्रॉग्स ऑल्सो लिव देयर. यहाँ पे इस किस्म के जानवर, प्लांट्स भी हैं पॉन्ड हैबिटेट में, एनिमल्स भी हैं. विच आर द एनिमल्स? फिश होती है, पॉन्ड होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, स्नेल्स होते हैं, एक्सेट्रा. देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो फाउंड इन देयर. थर्ड टाइप ऑफ लाइफ ओवर देयर, फर्स्ट इज प्लांट्स, सेकंड एनिमल, थर्ड इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आल्सो फाउंड देयर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द डेजर्ट हैबिटेट. अब ये जो रेगिस्तान का हैबिटेट है वो क्या होता है? डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट लैंड एरिया. सबसे जो है ना जो कम जहाँ पे रेनफॉल होती है, जो वो ड्राई है, वो डेजर्ट्स हैं. They receive very little rainfall. वहाँ पर बारिश बहुत थोड़ी होती है. Rain water quickly drains away due to sand. Because it is all sand, so whatever water comes over there does not get accumulated. It goes down into the soil. Some plants and animals have adapted themselves to. Some plants are also found over there. Plants like cactus is found over there. Euphorbia is found over there. Animals like lizards, snakes, kangaroo rats, camels, etc. found. So these animals have adapted themselves to the desert environment. So what is a desert environment? A desert environment receives less rainfall. It's a very dry area. Certain plants have adapted themselves to live there. Like which plants? Cacti, Euphorbia. Some animals can live there, like lizards, snakes, kangaroo rats, camel. They can live in their world there. So that is what plants like dates can also grow over there. Okay, the next is the rainforest habitat. A rainforest habitat, they are always wet. Rainforest has lots of rain and they are always wet. They receive rain all the year round. So because of a lot of rainfall over there, plants grow and trees grow and they have a kind of a rainforest over there. They receive rain all the year round. A large number of plants are found there. And which kind of plants are there? Shrubs, herbs and trees. Several varieties of butterflies, snakes, lizards, frogs, parrots, cockatoos, hummingbirds, etc. They are found there. Then cats like jaguars are also found there. Jaguar is a flesh-eating animal. Now this is about the rain. So we have covered about 4 different types of habitats. One is the rainfall habitat, that is desert habitat. Let me revise it all over again for you. A habitat, what is a habitat? A place where animal or plant can live and reproduce. यानी 2 बातें इसके मेन पॉइंट हैं. हैबिटेट किसे कहते हैं? जहाँ पे वो जिंदा भी रह सके और अपने आप को पैदा भी कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके अपने को. दूसरी बात, हैबिटेट क्या करता है? व्हाट डज इट डू? इट प्रोवाइड्स थिंग्स an organism needs for its life. Food देता है, shelter देता है, water देता है. Many populations of organisms live in each habitat. 4.3, the next topic is kinds of habitats. Organisms live in different kinds of habitats. Organism जो है ना वो
जैसे रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बनाया, मुख्तलिफ़ किस्म के हैबिटेट्स में रहते हैं, बाज़ डेजर्ट्स में रहते हैं, बाज़ माउंटेंस में हैं, बाज़ ग्रासलैंड्स में हैं, बाज़ इस तरीके से पॉन्ड्स में होते हैं. सो देयर डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट्स. वन इज़ द ग्रासलैंड हैबिटेट. A grassland habitat is a grassy, windy, partly dry area. These areas receive a medium amount of rain. ये जब बातें इसकी याद रखने की, grassland habitat बनता कैसे है. ये इसमें घास होती है, partly dry होता है, बारिश थोड़ी इसको होती है, और सॉइल फर्टाइल. ये चार चीज़ें इसमें होती हैं. तो ये जो जगह होती है, ओपन एरिया जो है, वो खुद ब खुद ही जो है ना वो ग्रासलैंड बन जाता है. इसमें कौन कौन से ग्रासेस आर द प्रोड्यूसर्स इन ग्रासलैंड. और जो घास उगता है ना वो ही प्रोड्यूसर है जो पैदा करता है खुराक बाकी जानवरों के लिए. कौन कौन से जानवर यहाँ होते हैं? मैनी मोस्टली ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक शीप, goat, cows, antelope, buffalo, that's live over there. A few flesh eaters like cheetah, foxes, wolf are also found over there. Birds like owl, eagles, hawks, etc. are also found in a grassland habitat. Then there are some kinds of insects also that are found over there. The next is the pond habitat. A pond habitat is an aquatic habitat. पानी का होता है ये, which is rich in water life. Plants like algae, duckweed, lily, etc. found. Animals like fish pond, frogs, etc. Microorganisms are also found there. Then the third is the desert habitat. Desert habitats are the driest habitats. They receive very little rainfall. Rainwater quickly dries away. It gets drained away, it gets soaked over, it sucks into the sand. Some plants and animals have adapted themselves to it. Plants like cactus, euphorbia, and animals like lizards, snakes, kangaroo, rats, etc. Camels live there. The fourth type of habitat is rainforest habitat. These kinds of habitats are always wet. They have rain all the year round. A large number of plants are found over there. Several varieties of butterflies, snakes, etc. Animals are also found over there. And then it has hummingbirds and kangaroos and jaguars are also found over there. Now I have an activity for you as an assignment. You visit a pond close by to your house and observe and write down what do you see. Just go and see a pond. उसमें बताना है कि प्रोड्यूसर्स क्या है, कौन सा उसमें जो है ना प्लांट्स कौन से लगे हुए हैं उसमें जो कि खा के दूसरे लोग जो कि जिंदा रहते हैं, और कंज्यूमर्स कौन है, उस प्लांट को खाने वाले कौन है, या फिश है या जो कुछ भी है. सो विजिट अ पॉन्ड, ऑब्जर्व एंड राइट डाउन हु आर द प्रोड्यूसर्स, हु आर द कंज्यूमर्स, एंड व्हाट इज द एबियोटिक फैक्टर. उसमें एबियोटिक फैक्टर को नॉन लिविंग फैक्टर उस पॉन्ड में क्या है. आई होप दैट यू विल बी एबल टू डू दिस थिंग. प्लीज मेक योर नोट्स नीट एंड क्लीन एंड कॉल मी ऑन माई सेल नंबर इफ यू हैव डिफिकल्टी. थैंक यू.